देखते हैं सुबह सुबह सबसे पढ़वाते हैं। हो गया मत कर कुछ। अब ऑनलाइन कन्वर्ट हो रहा है थोड़ा सा। ऑनलाइन कन्वर्ट हो रहा है, सब कुछ बोलना अच्छे से। Okay, now please welcome Mr. Satyam. Now start. इसका फोटो ले लोगे सब लोग खड़े होके? यस सर, वन बाय वन सबका फोटो आएगा। Good evening sir and good evening all. Today I am delivering a presentation on basics of IT. Can you see? What is it? Sorry. I am delivering this is a CIMAGE logo and on delivering the presentation on basics of IT. Okay. Yeah. Now change the slide, please. Yeah. This is an introduction of hardware. That what is hardware? Computer hardware includes the physical part of the computer. That was just like we have physical existence, that what we have touched. And hardware is so termed because it is hard or rigid. Yeah, this is rigid. Rigid means what you have touched. And hardware is that typically directed by software forms usable computing systems. Although other systems exist with only hardware. Okay. Just a minute. Yes, sir. What do you mean by hardware? Hardware controls the software or software controls the hardware, or both are dependent on each other? So, in your third question, it is dependent on both of us, because and hardware contains the software, because without hardware we can't run any software. Okay, and normally there are two types of hardware: internal and external. And there's some hardwares. And now inputs and output devices, which is a part of devices का spelling गलत लिख दिया आपने। device. कोई बात नहीं, आगे से Sorry. Now first is input device. Input device is a piece. Input device is a piece of equipment need to provide data and control signals to the information processing system. It means input device उसे कहते हैं जिसमें आप जिस तरह से आप कंप्यूटर सिस्टम को आप अपने कमांड को दे सकते हैं, अपने इंफॉर्मेशन इनपुट कर सकते हैं. And this is output device. And output device allows data to transmitted by the computer in a human friendly form. Means output devices उसे कहते हैं जिसके थ्रू आपके जितने भी डिवाइस जो भी आप देखना चाहते हैं आपको वो आपको मिलता है. सिस्टम जो आपको प्रोवाइड करते हैं उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं. And for this is the output device, this is input device, and this is the both. These devices are both, because it is what it is a touch screen. It is a touch screen. Touch screen can go called both input and output device. Now it's now we are slided to peripheral devices. The peripheral devices refers to all hardware components that are attached to a computer and controlled by computer system. Means peripheral devices को computer उसे कहते हैं जिससे कंप्यूटर में जितने भी सिस्टम्स हैं तो उसे अटैच किए जाते हैं. And in other words, peripheral are also defined as the devices
that can be easily removed and plugged into computer system. It means peripheral devices को आसानी से computer system में जोड़ा जा सकता है और remove किया जा सकता है. And these are the some peripheral devices. Now, types of software. No? Okay. I have. सबको बताओ सॉफ्टवेयर पे डिस्कस करो सबसे. Sorry, I have software definition also. Can you please forward next slide? नेक्स्ट स्लाइड हो. Sorry, sir. Technical issue. Now, ठीक है. I have also. Okay, well, ठीक है, एक बार देख तो आगे का दो स्लाइड को. बुक क्लिक करना था. इस स्लाइड को हटा दो तो जरा. इस पूरे स्लाइड को हटाओ. पूरा हटाओ. शायद इसके बाद आगे होगा. Yeah. No, I have an intro of now. I'm doing an intro of the software. That what is software now? A software is a set of instructions to achieve some certain goals or some particular objective. And in other words, a software is a collection of a specialized program that used for some specialized goals. This means a software एक ऐसा program है जो आप कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जो आप किसी भी स्पेशल काम को करने के लिए आपके पास एक स्पेशल प्रोग्राम होता है लाइक व्हाट्सएप फेसबुक etc and these all are the software programs. Please start. एप्लीकेशन सिस्टम बताइए. No, please start that. जब टाइप करो ना चलेगा. Yeah. Now time to forward to types of software. The types of software: first, system software, and second is application software. First, we have discussed system software. System software are those software which directly deals with the machine is called system software. It means जो machine से directly जो software machine से directly operate करता है उसे system software कहते हैं. For example, operating system, Android, Linux, Ubuntu, these are the system software. Now we forward to application software. Application software are those software which are run by the end user. Application software works with the help of system software. It means जो आप एक यूजर जो हम लोग हैं उनके द्वारा चलाए गए एप्लीकेशन को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं. फॉर एग्जांपल MS Excel, MS Word, MS Paint, PUBG etc वगैरह. And now forward. Now turns to memory. What is memory? I have memory. Yeah. Now comes to slide of memory. First, what is memory? What is memory? Computer memory is a device that is used to store data or programs on a temporary or permanent process for use in an electronic digital computer. Means these are the memories. Means जितने भी आप स्टोर कर सकते हैं, आप जो जिस किसी भी डिवाइस के माध्यम से आप अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं उसे मेमोरी कहते हैं. And now we turn to types of memory. So first is primary memory and second is secondary memory. So primary memory, it is temporary memory and it is directly accessible by the processor. It means direct machine से काम करती है primary memory. And third is
It is volatile in nature. It means yeah, it is volatile in nature. And fourth is it's more expensive. ये बहुत इसकी cost बहुत ज़्यादा है market में. And it is also known as main memory. ये कंप्यूटर की main memory होती है. Now follow to secondary memory. It is a permanent memory. It means आपकी जो भी डाटा है वो स्टोर रहती है इसके सेकेंडरी मेमोरी में. फर्स्ट जो टेम्परेरी मेमोरी है इसमें जब तक आपको रन कर रही है तब तक ही आपके डाटा स्टोर है. उसके बाद ये यहाँ चली जाती है जब आप सेव करते हैं. इट इज नॉट एक्सेसिबल बाय द प्रोसेसर. इट मींस जो कंपनी के सिस्टम के जो प्रोसेसर है वो सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं करती है. इसे एक्सेस करती है कौन? एंड यूजर, हम लोग. एंड इट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर. इस डिवाइसेस आर लेस एक्सपेंसिव. बहुत कम दाम में मिल जाते हैं हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव वगैरह. इट इज आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी. ऑक्सिलरी, यस, ऑक्सिलरी मींस सपोर्टिव मेमोरी. इट इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी. एक्सटर्नल को बोलते हैं अच्छा है सबसे इंटरनल और रैम को हमने बोला इंटरनल. इसको हार्ड डिस्क को सेकंड एक्सटर्नल क्यों बोला? खासकर रैम को अंदर लगाते हो. रैम को अगर निकाल दो तो सिस्टम का काम चलना बंद हो जाएगा. हार्ड डिस्क को बाहर में निकाल दो तो आप पेन ड्राइव से आप मूवी देख लो, गाना चला लो, चलेगा. निकाल के काम आपका जीरो हो गया. Now thank you for cooperate me with me. Thank you. ये रिपीट करते हैं. दूसरा पेज में ना दूसरा टाइप तो आईटी करेंगे ना. इसी का दूसरा टाइप आईटी का नहीं ना. इसको रिपीट करते हैं. इसी को आगे से ना कर ले. हाँ वो कर ले. बहुत अच्छा बना रहे हैं. कर सकता है. बहुत अच्छा बना है. मैंने इंट्रोडक्शन अपना दो. I said Good yeah. afternoon, everyone. I am Aditya Sinha. I am a student of PGDM second sem. Today is the PPT presentation of basics of IT, and this is the first page of this is our respective CIMAGE brand logo. And next is basics of IT. Today is our subject. Introduction of hardware. पहले somebody asked what do you mean by hardware function. आप लोग कोई डाउट नहीं है. प्रत्युष, सत्यम, भास्कर, सही इंट्रोडक्शन है. इंट्रोडक्शन देने के बाद इसका नाम क्या है? सोनल. पूछा करो क्वेश्चन. यस, प्लीज कंटिन्यू. Computer hardware includes the physical parts of a computer. That's called hardware. Hardware is so termed because it is hand or rigid with respect to change. The third point is hardware is typically directed by software forms a usually computing system. Although other systems exist with only hardware. The fourth point is normally there are two types of hardware. First one is hardware external and second one is internal. प्रत्युष, इंटरनल हार्डवेयर एक्सटर्नल हार्डवेयर क्या होता है? एक्सटर्नल का तुम 2-3 एग्जांपल दो, फिर मैं बताऊंगा. कॉपी में तो कॉमन सेंस है. कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है. External, इंटरनल हार्ड डिस्क है, रैम है. इंटरनल है, बात खत्म. and this is the some hardware of computer. एक्सटर्नल और इंटरनल बोथ. They both are now input and output devices. The first one is input devices list. An input device is a piece of equipment used to provide data and control signals to an information processing system. Output devices. An output device allows data to transmitted by the computers in a human-friendly form. And this is the input and output device. This next slide. Peripheral devices. The peripheral devices refers to all hardware components that are attached to a computer and are controlled by computer system. The second point is, in other words, peripherals are also be defined as device
that can be easily removed and plugged in into the hardware of computer system. This is the computer system, and they have some components of computers. Types of software. There are two types of software normally. First one is system software, and the second. Aditya, can you stop working? What have you problem? Sir, for order statement. Okay, just a minute. Yeah, yes. Aditya, you can continue now. Continue now. First of all, sorry for inconvenience. First, introduction of software. And a software is a set of instructions to achieve some certain goals for some particular objects. The second is a software is a collection of specialized program that is used for some specialized goals, like WhatsApp, Facebook, etc. And these are some application software examples. Right, and then we have two types of software. The first one is system software, the second one is application software. Please change next slide. Memory. Memory is the main part of computer and human also. Memory is a very important thing. And computer memory is a device that is used to store data or program on a temporary or permanent process for use in an electronic digital computer. These some images of memories. First one, hard disk, RAM, ROM, CD, DVD. Types of memory. There are two types of memory: primary memories and secondary memory. Primary memory is the temporary memory. And second is it is directly accessible by the processor. Third, it's volatile in nature. Fourth, it's more expensive. Then it is also known as main memory. Then the secondary memory is first one. It is a permanent memory. It is directly accessible by the processor. It is non-volatile and it is cheaper than the primary memory. It is also known as auxiliary memory. It is also known as external memory. Please, next slide. Sorry. Thank you, all of you, for giving me this wonderful opportunity. Thank you, sir. Thank you so much. Sonal, continue. कोई क्वेश्चन पूछे तो उसका क्वेश्चन पूछा कीजिए आपको पास में। Yes, क्या आपने जो बनाया है वो खत्म होता है। So, इस बार मैंने बनाया मैनेजर बनो तो सिंपल सी बात है, प्रेजेंटेशन देना रेगुलर पड़ेगा। एक साल का जॉब में चले जाओ। इस बार मैंने बनाया है बहुत छोटा है। ठीक है, बहुत अच्छा है। अगले भास्कर बनाएगा सबसे शानदार। नेक्स्ट जो होगा। Ready? Are you ready? Yes. My name is Sonal Priya, and I'm student of. चेहरा नहीं आ रहा है। My name is Sonal Priya, and I'm student of second sem of PGDM. And I'm here to present the presentation of basics of IT. Introduction of hardware. The computer hardware includes the physical parts of a computer. Hardware is so term because it is hard or rigid with respect to changes. Hardware is typically directed by software from a visible computing system, although other systems exist with only hardware. Normally, there are two types of hardware.
internal or external. These are some examples of hardware. Input or output device. Input device. An input device is a piece of equipment used to provide data and control signal to an information processing system. Output devices. And output devices allows data to transmitted by the computer in a human-friendly form. These are the two examples: input or output devices. Peripheral devices. Now, the peripheral devices refers to all hardware components that are attached to a computer and are controlled by computer system. In other words, we can say peripheral are also be defined as device that can be easily removed and plugged into a computer system. These are some examples of introduction of software. A software is a set of instruction to achieve some certain goals or some particular object. Now the next point is a software is a collection of specialized program that is used for some specialized goals, like WhatsApp, Facebook, etc. These are some examples of Yahoo. Now the types of software. System software is the one. System software are those software which directly deals with machine is called a system software. Examples. हम जब मशीन बोलते हैं तो मशीन का मतलब क्या है? Machine like computer that technology. तो अपने मशीन अपने कंप्यूटर सिस्टम हार्ड डिस्क के साथ डील करता है सबसे पहले. Now the application software, those software which are run by an end user. Application software works with the help of system software. The examples are MS Excel, MS Word, MS Paint, PUBG. Now there's memory. Computer memory is a device that is used to store data or program on a temporary or permanent processor for use in electronic digital computer. These are the examples of hard disk, RAM, ROM, CD, drive. These are the examples of memory. Types of memory. Primary memory is the most secondary. Primary is the temporary memory. It is directly accessible by processor. It is volatile in nature. It is more expensive. It also known as main memory. Also known as internal memory. Now the secondary memory, it is permanent memory. It is also accessible by processor. It is also volatile in nature. Devices are less expensive. It is also known as auxiliary memory, and it is also known as external memory. Thank you all of you. टाइम से कम है इसको सब बच्चे को करना है थोड़ा. नेक्स्ट क्लास में मंडे को एक बार फिर से किया जाए. ऐसा बड़ा करेंगे तो कम से कम एक बंदा कम से कम 3-4 मिनट तक. 3-4 मिनट कितने मिनट? 12 मिनट.
मैंने 12 मिनट देखा। म्यूजिक भी सिस्टम थोड़ा सा होना चाहिए इसमें। हाँ गलती लिख रहा है क्या डिवाइस डिवाइस केस में हो ब्लेंडर चीज कर दिए तो। ये चीज पता नहीं कैसे हुआ। और परट्यूस का नेक्स्ट में जो बच गया था वो हम लोग करेंगे। एक दो तीन चार को बचे हैं, चार को हम लोग करेंगे। एक ये भास्कर ये किया आदित्य किया चार किया, तीन किया, तीन बच्चा तीन किया किया। और उस दिन सर ऑडिट नहीं ना कोर्ट चल रहा है तो और उसमें तो करना है कोई बुराई नहीं है। नेक्स्ट अच्छा। जैसे टाइम भी था लेट से उसका तो आप लोग अगर देना है तो फिर डेटाबेस पे दो। कुछ अच्छा टॉपिक उठाएं। जो डीडीएल डीएमएल डीक्यूएल डाटा ही बहुत बड़ा टॉपिक है। हाँ उतना भी बड़ा नहीं उठा रहा है। 5 मिनट तक चलेगा। हमको कितने टाइम के कितना था इसका? 9 पेज था। हाँ 10 पेज का रहेगा। यही आज अट्रैक्टिव करना चाहिए। ओके शादी का कार्ड या जैसे नेटवर्किंग का प्रोटोकॉल्स अगर उठा सकते हो जैसे नेटवर्किंग का प्रोटोकॉल्स या नेटवर्किंग का केबल्स जो डेटा ट्रांसफर करने के लिए कितने टाइप से केबल यूज करते हो, कितने टाइप से केबल तुम लोग जानते हो कि जो डेटा ट्रांसफर होता है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे किस किस टाइप्स के डेटा केबल्स यूज होते हैं? दो ही जानते हो? किस किस टाइप्स के डेटा केबल्स यूज होते हैं? कोएक्सियल केबल जैसे जैसे ये डेटा पास कर रहा है ना, डेटा ही पास कर रहा है ना, और क्या कर रहा है ये, और दूसरा काम करने रहा है। तो कौन कौन से केबल्स यूज होते हैं नेटवर्किंग में, इंटरनेट में डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए? जैसे कि ईथरनेट, इसको बोलते हैं ईथरनेट, और कोएक्सियल केबल हमने बता ही दिया। और बताओ और बोलो, और कौन सा केबल यूज होता है? फाइबर ऑप्टिक, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर, रेडियो लिंक, ये सब जुड़े हुए हैं, ये सब जुड़े हुए हैं। और बताओ टाइप्स ऑफ नेटवर्क बताओ जल्दी जल्दी, एक चला के रखो, चला के रखना चाहिए। टाइप्स ऑफ नेटवर्क में क्या क्या होगा? लैन बैन मैन नहीं पढ़े? यस सर। क्या टाइप्स ऑफ नेटवर्क ही तो है जिसके थ्रू पूरी दुनिया में नेटवर्क फैला हुआ है। लैन बैन मैन, आपके कॉलेज में क्या है, लैन है कि बैन है कि मैन है? नहीं, कॉलेज कैंपस के अंदर, प्रीमिसेस के अंदर लैन है। और आपके पटना शहर में क्या होगा? मैन होगा। जब ग्लोबली जुड़ते हैं, इंडिया से यूएसए जुड़ रहा है, यूके, मतलब 2 डिफरेंट सिटीज या 2 डिफरेंट कंट्रीज या 2 डिफरेंट लोकेशंस, तब होता है मैन। मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन का वाइड एरिया नेटवर्क, लैन का लोकल एरिया नेटवर्क। वाईफाई तो डायरेक्ट सैटेलाइट से लिंक है, या उसको कर सकते हैं टावर से ही है, जिसका वायरलेस है ना, वायर से नहीं आता। यहाँ लगा हुआ है। देखो होता क्या है, अब बताता हूँ। एक टर्म होता है एपीआई, क्या टर्म होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है वो। आप सोचते हो कि यहाँ से जो सैटेलाइट ऊपर गया कंट्रोल हो रहा है, तो एपीआई के थ्रू वहां से सिग्नल भेजे जाते हैं, यहाँ से सिग्नल जाते हैं। हजारों लाखों किलोमीटर चीज दूर है, वहां तार बिछा हुआ है क्या? तार तो साथ नहीं गया, जाता है। तो सिग्नल्स हैं, जो सिग्नल्स आपको मिलते हैं और आप उनको सिग्नल ट्रांसफर करने का काम करते हैं। सिग्नल्स के थ्रू डेटा कम्युनिकेशन होता है। किसके थ्रू? सिग्नल्स के थ्रू। आपके मोबाइल पे जो फोन है,
लोग कहते हैं जंगल में जहाँ कुछ नहीं जाता वहाँ सैटेलाइट फोन पे सिग्नल चला जाता है। जब कहीं पे सिग्नल नहीं मिलता तो सैटेलाइट फोन पे सिग्नल, जो बड़े बड़े लोग की सुरक्षा में जो सुरक्षा कर्मी रहते हैं या बड़े लोगों जो प्राइम मिनिस्टर लेवल, चीफ मिनिस्टर, बड़े बड़े जज, उनके पास सैटेलाइट फोन हमेशा होता है कि कहीं सिग्नल उनका मिल ही जाए, कैसा भी स्थिति हो सिग्नल स्ट्रेंथ मिल जाए, उसको सैटेलाइट फोन बोलते होंगे, आप लोग भी जानते होंगे। तो ऐसा टॉपिक चुनो नेटवर्किंग का या डीबीएमएस का, बेसिक ऑफ आईटी तो सबको पता हो गया, इनपुट आउटपुट पेरिफेरल किसको नहीं मालूम है? इस क्लास में एक बच्चा मास्टर हो गया उस चीज का, नहीं हो गया? बेसिक इनपुट आउटपुट पेरिफेरल सब जानते हैं। प्रत्युष तुम्हें पता है कि नहीं? तुम्हें अनुराग गौतम? तो बेसिक चीज में सब लोग मास्टर हो गए हैं, जो हम समझ रहे हैं। बेसिक क्या, बहुत अच्छे रूप से नॉलेज हो गया इस क्लास के बच्चों को। इंटरनेट से आपसे पूछे, इंटरनेट का प्रोटोकॉल भी हम बताए थे पिछली क्लास में। एचटीटीपी क्या करता है, एचटीटीपीएस क्या करता है, प्रोटोकॉल बेसिकली करता क्या है, सब कुछ पे चर्चा अच्छे से चली। तो उसी सब टॉपिक में कोई अच्छा टॉपिक जो लगे तुम लोग को, और जैसे आज जो करंट मतलब टॉपिक हो जो अभी मार्केट में सरवाइव कर रहा, उस टॉपिक को चुन के लाओ, किसी टॉपिक को। सर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, किसी एक्सटर्नल पार्ट पे एक चीज करके लाओ, हमें मजा लगेगा सुनने में। आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर पढ़ने में 2-4 घंटा टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं, उतना तो मास्टर हो जाओगे सब लोग, तो जीवन भर काम आएगा। उस मतलब आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर पे क्या एक्सप्लेनेशन इस टाइप का, क्या आईपी एड्रेस है, कितने प्रकार का होता, पोर्ट नंबर क्या होता, ये चीज। तो मतलब लगभग कितने पेज का बन 4-5 पेज जितना बनाए बस बहुत है। ठीक है, तो मंडे को इसका करते हैं। आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर अगर कर सकते हो भास्कर, उस दिन देह मत चुराना है। नहीं सर, आईपी एड्रेस पे देखेंगे सर। जो आईपी एड्रेस बहुत अच्छी चीज है, तुमको लगता है आईपी एड्रेस पे तुम साइबर सिक्योरिटी में जॉब में जा सकते हो, गवर्नमेंट जॉब लग सकती है तुम्हारी। जिसको केवल नेटवर्किंग का आईपी एड्रेस ढंग से आ जाएगा, उसको गवर्नमेंट जॉब का चांस बहुत बढ़ जाता है। दिया जाएगा इसका। अरे हाँ, एक मिनट अभी रुको। बंद कर दिया लैपटॉप खोलना बड़ी समय उसका खुद एक आता है वो हमारा चेंज जिसमें कुछ आ गया होगा, स्लो हो गया होगा, ये करो। रन में जाओ, रन में कंट्रोल, उधर आओ, देखो इधर आओ पहले। रन में आए, रन खोले, प्रीफेच लिखते हैं, प्रीफेच पे जाओ, प्रीफेच, ओके ओके पे गए। ये सब फाइल यही स्लो कर देता है, ये सब फाइल को डिलीट मार दो, हम भी मार दें तो खोल दिए तो। ये क्या है सर? ये सब जब हम लोग काम करते रहते हैं मशीन पे तो बहुत फाइल इंटरनली जनरेट होते रहता है, जो मशीन को स्लो कर देता है, और मेरा मशीन भी फास्ट हो जाएगा। एक तरीका और तरीका है, 3 नहीं हुआ, इसको फोर्सफुली करेंगे, कर तो देंगे, तो दूसरा कमांड लगाएंगे। क्या बताएं सर? वो कंट्रोल आर में गए, रन मोड आया, वहां प्रीफेच पे गए। पहले हम वीडियो बंद करें सर। लाइव चल रहा है, लाइव बंद कीजिए। कौन ऐसी बंद कर दिया? तो ठंडा इतना लगता है। दिया है ना जैकेट। रिकॉर्डिंग ऑन है अभी।
PGDM सेकंड से सर इस बार जो प्रेजेंटेशन बनाएंगे ना उसमें ऑडियो वीडियो भी डाला 15 तारीख क्लास का पूरा यूट्यूब पे नहीं चला नहीं इस महीने का नहीं